Yes, sir. Good morning, sir. We are live today. Good morning. We'll first start with those questions which are already asked to us. Karan Sharma has asked, sir, I have 51% in plus 2 and 60% in degree. Will this affect my SSB? See, everything affects your SSB. Your marks of 12th and the marks you have got in graduation put you in a sort of average or below average type of a student. And with such marks, normally a person does not get selected in the defense forces. However, the thing is like this is a reality which you cannot change. What you have to do is start working sincerely now to improve your academic ability. You can please go and listen, not listen, it is the video recording is not there. You can read about the case of Ajay Singh Rajpurohit, who was one of our students, who had taken 6 years to pass his engineering, and he is an officer today. So it gives a very clear evidence that if you resolve to improve your academic abilities now, we will not hold your past track record against you. Because after all, what is going to get selected is what you will be selected based on your present capabilities. And if you overcome your past weak area, then it is okay. However, if you continue to have the same kind of track record as far as your academic abilities are concerned, which you had displayed in your 12th and graduation, and you are working with the same level of sincerity and IQ, then your chances of selection would be pretty low. I hope you have understood the point that I have explained. Thank you very much. Okay, sir. Munna Kumar has asked, sir, can you please tell why a recommended candidate gets out in the next attempt? Okay. Such things happen. I have myself had cases. You can read the case of Digant. Digant had been recommended in his first attempt for NDA, and he did not join. And thereafter, he tried for CDS, and his video is there with us, recording. And I think in his fourth or fifth attempt, he managed to, clear the SSB, and then he joined IMA. Now he is a commissioned officer. So think is like this, let us understand personality in a holistic manner as also the selection system. Let us take a candidate A. Now this candidate A is very competent in all round abilities. So much so that, if he performs his worst, let us understand one more concept, and that is, each one of us will not always perform to the best of our ability. That is, with an example, let me explain. Let us say the interviewing officer asked you some questions related to general knowledge, which you had just read last night or that day morning. So you will be quite fresh with that knowledge, and you will be able to answer well and very confidently. Similarly, you had, in OIR test itself, in your previous attempt, you had got a battery of test, and the same battery gets repeated. So naturally, your performance would be good in that because you've already done it. You get a lecture topic which you were just reading or you were discussing with your friends. So now, in such situations, your performance would be at the top of your ability.
Now, let us say these things can go absolutely reverse. You can get the worst topic, uh, worst kind of questions to be asked. The only thing which you had not rehearsed, in OIR or something gets asked. So your performance will come down something, let us say 10%. So let us say an uh, individual's performance varies between 90% to 80% of his, uh, I mean, he'll play in that role. Let's say 90% is his top, so he can come down to 80%. That's the worst. So that's one thing. So now, if the candidate A is so good that even on his worst day, he is still easily fit for selection, he will get selected irrespective of how his good day or bad day because he's that good. So selection system will keep selecting him each and every time he comes up for SSB. Now, most defense aspirants are not of that caliber. So this person, when he has performed at his best, then he was in a position to be selected. But on the day when he was not at his best, then he was not in a position to get selected. So this can be one reason. Another reason can be that a candidate who has got recommended, sometimes he tends to be overconfident. And he's becomes casual. He says मैं तो select हो ही जाऊंगा क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है मेरा fit है. And because of that, his demonstrated performance comes down. That can be another reason. Fine. And the third reason can be that the selectors, they are not gods and they don't work with absolute precision. It's a what we are doing, our study, our methodology of functioning of the psychologist, GTO, and interviewing officer, they are highly scientific. But performing the job is an art as much as it is for a doctor when he is, diagnosing a patient, or a judge who is pronouncing judgment. Now, you can yourself see doctors, you can have evidence from your home and all that, that differing opinions have come from doctors. You would find that, so often it is happening that the judgment a person is getting in cases is highly dependent on the judge's past profile, that what kind of inclination he has, which is actually absolutely incorrect, because the judgment is based on a sense of fairness and interpretation of the constitution and the laws. So that should be so. Actually, a litigant should be expecting justice absolutely the same from any judge, but it is not happening in real life. That you would know if you see the track record of the judiciary. मतलब Supreme Court, High Court का overturn कर देता है, and such like things keep happening. So this comes the aspect of the assessor. So overall assessment system, we try and see to it that we work in a very, very objective manner. And subjectivity is, we make effort to reduce it as much as possible, but we are human beings, so chota mota yahan ho sakta hai. So some of these factors and a combination of these can cause a person to be recommended once and not getting recommended next time when he goes for SSB, when he has not changed much overall in his abilities. I hope the question has been answered adequately. Thank you. Vikas Kumar has asked, Sir, what to do if your daily plan gets repeatedly hampered by unexpected family work and responsibilities? See, normally this will not happen. This is a kind of plea which people take to not follow
an organized routine. Because you grant me that I've got a reasonable amount of experience working with the civilians, with Faujis and all kinds of people. Thing is like this. Please, I advise you to read in our ebook or the practical guide to become an officer, the essay about time management. So thing is that what you have planned would be these activities would be coming in your quadrant 2. And quadrant 2 activities are the ones which are important, but they are not urgent. You have the scope of pending them. And most disorganized people, they spend their lives fighting, firefighting, only handling urgent things which, which, if you don't do anything about them, then you will have very serious problems. So it could be that your family life is like that. It's very much possible. I have seen most of the organizations working in that manner. I have seen in the defense services where I spent maximum time, the units, they generally work in the firefighting mode. They are tackling only the urgent things and not the important and non-urgent aspects. Like क्या होता है हमारे अब एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन जो है वो बटालियन का एक इम्पोर्टेंट चीज होती है हर रेजिमेंट का, तो उससे एक महीने पहले जागते हैं लोग और फिर उसके बाद जो है एकदम जोर लगा के सब काम करना शुरू होता है. उससे पहले तक साल भर तो है लाई लो करते रहते हैं. टू द एक्सटेंट ऐसे ओके यूनिट की लाइफ छोड़ दो, इंडिविजुअल को ही देख लेते हैं हम. कितने आपको ऑफिसर मिलेंगे जो जब उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से पहले मेडिकल टेस्ट होना है उससे पहले ही वो अपना वेट कंट्रोल, एक्सरसाइज, वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का सारा मामला जो है वो उस टाइम में वो जोर डालना शुरू करेंगे एक महीना पहले. उससे पहले जिंदगी कहेंगे चलने दो ऐसे, which is absolutely wrong. Actually, they should keep themselves fit throughout the year. But this is the attitude of the society and general, and whatever I have seen that हिंदुस्तानियों को काफी ज्यादा अप्लाई करता है, तो इस हिसाब से हम काम करते हैं. तो आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जैसे मैंने यूनिट ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि आपके घर में भी फायर फाइटिंग से काम चलता हो कि जब अर्जेंसी है तभी किया जाए. तो यू विल हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दैट. यू विल हैव टू मेक योर प्लान एंड वर्क सिस्टमैटिकली to achieve your goals. Now what will happen is, because your family life is unsystematic and वहां पे urgencies आती रहती हैं, तो आपके plans जो हैं वो disrupt होंगे, पर वो इतने ज्यादा disrupt नहीं होंगे कि आपकी पूरी जिंदगी ही disrupt हो. Believe me, it will not happen. And I am talking from absolute experience, because ऐसे ही यूनिट्स और सिस्टम्स में मैंने काम किया है. मैं हर जगह हेड तो था नहीं. I was working in a subordinate position, but wherever I was, I tried to bring in systems below me and keep my own life systematic. Even here in the working in the No Frills Academy, the students का जो desire है वो होता है कि हमारा इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट हो. So far they're good. Thereafter they want again and again mock interviews. मॉक इंटरव्यू कर दो सर, मेरा एसएसबी आ गया सर, एक मॉक इंटरव्यू कर दोगे सर, मैं कुछ आपके पास जो है ना स्टोरीज भेजना चाह रहा था सर, थोड़ी चेक कर दोगे सर, थोड़ी एसआरटी चेक कर दोगे. तो वो जो है मेरे को अपनी जिंदगी के तारीफ, क्योंकि उनका फोकस है शॉर्ट टर्म वाला मामला कि ये साइकोलॉजी का कर कर आकर किसी तरह से काम निकाल दिया जाए. So they are trying to draw me towards their unsystematic lifestyle, and I have to constantly keep drawing them towards a systematic lifestyle. कि भाई अपनी जिंदगी के सिस्टम ऑर्गेनाइज कर लो तो आपके साइकोलॉजी टेस्ट हो ही जाएंगे. मॉक इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं किसी का लेता भी नहीं हूँ. So this is what it is. So
if you believe that the society and your family and environment can disrupt your plans of life, they will get disrupted. But if you decide that it cannot get disrupted, you will be able to get reasonable control over your life. And in this manner, you would be able to indirectly influence people in your workplace, in your home, also to get more systematic. I have been trying to do that throughout my life in wherever organizations I have been working. And I have been fairly successful to get things, streamlined in a better manner than what they were. Below me, above me तो खैर possible नहीं होता, influence senior खास होते नहीं है, कोई एक आधा हो जाए तो हो जाए. So that is what it is. So that's what you should try and do. Fine. Okay. Thank you. Yes, sir. Sir, Akash Sharma has asked, sir, currently I am giving some corporate interviews. There I have to be a bit diplomatic. Will this affect my SSB interviews? नहीं, अफेक्ट नहीं होना चाहिए. कंपार्टमेंटलाइज करके रखिए इन चीजों को. देखिए, एसएसबी में चलता है सच और कॉर्पोरेट की दुनिया में चलता है झूठ. कॉर्पोरेट की दुनिया का झूठ बड़ा क्लियर है, उसमें हेजिटेशन बिल्कुल मत रखिए. आपसे जो है, आपको 4 दिन पहले पता चला होगा कि ऐसे नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन भी था. अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको बोलना ये चाहिए कि सर, मेरी बचपन से जब मैं पैदा हुआ था तब से ड्रीम इसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की थी. ठीक है ना? तो ये सारे आम झूठ बोलना है. और जो आपका एचआर इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2,000 रुपए उसको ज्यादा रेज मिलेगा, वो छोड़ के निकल जाएगा. उसको उतना कमिटमेंट उसका है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इतना ही आपका भी है. तो झूठ झूठ जो है तो वो क्वालिफाई करके आपका सिलेक्शन होता है. वहां जाके अगर आप सच बोलेंगे कि नहीं सर, असल में तो मैंने फौज में जाना है, अब मेरे पास ये टाइम है, तो नेहरू सर ने बोला था कि भाई 4 से महीने कुछ तो नौकरी शौकरी करो, इसलिए मैं आपके पास आऊं, अगर ये बोलोगे तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दुनिया चलती है झूठ पे. तो ये तो रही कॉर्पोरेट की बात. अब एसएसबी का डिपार्टमेंट जो है, ये मामला है सच का. इसमें सच होना चाहिए क्लियर कि आप एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन आपकी डिजायर थी पैरा कमांडो बनने की आर्मी में. तो आप एयरफोर्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्लियरली बताओ कि मैं आर्मी में पैरा कमांडो बनना चाहता हूं, ये मैंने एफकैट एग्जाम भी पास किया हुआ था, इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं. तो फिर वो कहेगा कि भाई भी आए क्यों? तो आपने ये बताना है कि भाई देखो, मैं डिफेंस फोर्स से ज्वाइन करना चाहता हूं, अगर कमांडो नहीं बन पाया तो भी आर्मी तो ज्वाइन करना ही चाहता हूं. ओ सॉरी, आर्मी नहीं, एयरफोर्स तो ज्वाइन करना ही चाहता हूं ग्राउंड ड्यूटीज के लिए. दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू मी. So please be honest, and if you are competent, you will be selected. And this will not be taken against you. कि आप एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू के लिए आए हो, लेकिन आपकी मोटिवेशन है आर्मी के लिए. इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको बॉडी लैंग्वेज ऐसा इंडिकेट करेगा, अच्छा भाई फिर क्यों आए, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऑल दैट. डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज he is a sincere professional who will be pronouncing correct objective judgment upon you. And mind you, if you are fit enough, he will take you. You can listen to the interview of Vaibhav, who is about to finish his training in the Air Force Academy. He wanted to become a para commando. He could not get selected in IMA. He got selected in Air Force. मुझसे पूछा था क्या करूं, मैंने कहा भाई साहब मिल गई है, चले जाओ. हमारा 240 नंबर है, रिटन में भी मेरिट सेरिट तुम्हारी ठीक ठाक आ गई है. Do the training and become an Air Force officer. So that is what he's doing. And exactly the same thing he had told the interviewing officer कि मेरा इंटरेस्ट प्राइमरी जो है इन्फेंट्री का पैरा कमांडो बनना है, एयरफोर्स के लिए क्लियर किया हुआ है, इसलिए आया हूं मैं. एंड दे टुक हिम. फाइन. तो कॉर्पोरेट में डिप्लोमेसी नहीं बोलूंगा, इट्स नॉट डिप्लोमेटिक. झूठ बोलना सीधा सीधा, मतलब प्रेज करना यार. अब आप ये देखो यार, नारायण मूर्ति इन अ पब्लिक गैदरिंग, when he was addressing students of IIM Ahmedabad, he said कि ये 91 के रिफॉर्म जो थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सही तरक्की हुई है, ओपनिंग अप जो हमने किया, उसमें कुछ दम नहीं था. अब जो मोदी साहब की पॉलिसीज है बहुत बढ़िया है. तो आई मीन यू कैन इमेजिन व्हाट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स गोइंग अराउंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. जब नारायण मूर्ति जैसे आदमी शरेआम झूठ बोल रहे हैं, तो you can understand how the corporate world works. Fine. I hope I have answered you adequately. Thank you.
Okay, sir. Sir, Anchal Shukla is asking, is it good to take creatine before workout? आई वुड से क्रिएटिन ना ही लो तो अच्छा है। क्रिएटिन जो है इट्स नॉट दैट क्रिएटिन इज बैड, एंड काफी मैंने देखा है बीफ ईटर्स वगैरह जो हैं दे प्रेफर, एंड उसमें क्रिएटिन होता है, एंड देयर परफॉर्मेंस इज आल्सो गुड। बट आई वुड से नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन लीजिए। अगर सिंथेटिक वाला भी लेते हैं तो वे प्रोटीन लीजिए, एंड टेक इट इन रीजनेबल क्वांटिटी ओनली। क्रिएटिन वगैरह का दिक्कत क्या है, ये आपके किडनी शिडनी से बहुत जोर डाल देता है, उसको क्लियर ऑफ करने के लिए तो पानी वानी बहुत पीने की जरूरत है। तो इसके जो है थोड़े बहुत रिस्क हो सकते हैं, तो इसलिए आई एम नॉट मच ऑफ एन एडवोकेट ऑफ क्रिएटिन for workouts. Go for protein. I myself have never taken creatine, nor I have advised to any boxers who have been training with me. And we have trained up to India level competitions and all that. तो हमने ये नहीं लेते रहे। अब प्राइवेटली कोई लेते हो तो I do not know. So that is as far as my knowledge about creatine is concerned. बाकी कुछ मेरे साथ के वो रहे हुए हैं who have been national level lift throwers and all, hammer, discus वगैरह वाले, they were quite into pork and beef and all that. But once again, they were taking it through natural sources and not artificial creatine. तो ना लो तो सेफ है यार, प्रोटीन से काम चल जाना चाहिए। थैंक यू। Okay. Yes, sir. Parth Sharma is asking, is there any difference in selection criteria between IMA and OTA entry when SSBs are the same based on the training academy or something? नो नो नो, सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे लिए सेम रहता है यार। हम वो 15 OLQs हैं, उसमें हम देखते हैं द गैप इज मेजरिंग अप एडिक्वेट और नॉट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, वो कोई भी एंट्री हो। So that's not an issue. Don't get hassled up. Yeah, thank you. Okay. Sir, Jelus Sias is asking, during the interview, is it really necessary to keep both the hands and knees just like an ideal person, or I want to sit taking the support of the chair and I can move my hands? देखिए क्या है, आप किसी कोचिंग कोचिंग एकेडमी से जाते हैं तो वो इसकी किस्से कहानी बताते हैं। नो फ्रिल्स एकेडमी का अप्रोच है, हम इन चीजों की बात ही नहीं करते। आप नेचुरल रहिए, रिलैक्स्ड रहिए, think that he is a friend who is curious to know about you and answer the questions. Don't even think about eye contact, hand posture, hand gesture, body posture and all that. जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, that will be best। नहीं तो क्या होगा, आपके 30% एनर्जी इन्हीं चीजों पे चली जाएगी कि मैंने हाथ कैसे रखा, मैंने टांग कैसे रखा, और गर्दन कैसे रखी। तो 70% ही आपका दिमाग काम करेगा जवाब देने में। मैं कहता हूँ 100% ध्यान सवाल पे दो, उसका जवाब दो, जैसा पोस्टर वोस्टर रहता है उसको वैसे ही रहने दो। ऐसे ही मैं भी जिंदगी में करता रहा हूँ। अभी भी जब आपके सवालों के जवाब देता हूँ, डोंट गेट बॉदर्ड एट ऑल व्हाट आई एम लुकिंग लाइक, और मैं what are my mannerisms and all that, जो है वो है यार। So that is the approach of No Frills Academy. Yeah, thank you. Yes, sir. Vedant Avasti is asking, sir, in hobbies section, I included cube solving, journal writing. Is it necessary to include physical activity as well? I have been running for the past 2 months, but I am skeptical. What should be included? नहीं, 2 महीने के दौड़ने वाला कोई धावक नहीं हो गए हो आप, उसको कोई हॉबी में डालने का मतलब नहीं है। कोई जेन्युइन चीज है उसको डालो यार, ये फर्जी वाला पूरा मत करो। मेरे पास कितने स्टूडेंट आते रहे, स्टूडेंट नहीं सॉरी एस्पायरेंट्स, जिनका मैंने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया, तो वो लिखते हैं कि हॉबीज में क्या है, रीडिंग, और पता चलता किताब जिंदगी में कितनी पढ़ी, 2-2.5 से ऊपर नहीं पढ़ी किताब। तो क्या यार कि सर ये अभी आधी पढ़ी है, अभी आधी पढ़ रहा हूँ, और हॉबी है रीडिंग। तो यार 20-25 किताब भी नहीं पढ़ी तो क्या रीडिंग हॉबी है यार। जेन्युइन बातें लिखो, फर्जी वाला मत करो। आपका सिलेक्शन इससे नहीं हो जाने वाला कि आपने अगर के
जिसने 2 किताबें पढ़ी थी या जिसने 20 किताब पढ़ी थी, तो 20 किताब वाला जो है वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। हमें मुश्किल से लोग मिल पाते हैं ठीक ठाक, जो अंग्रेजी ठीक बोल पाए, जिनकी रीजनिंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल सेंस ठीक ठाक हो, फिजिकल ठीक ठाक हो, तो उनको हम ले लेते हैं। तो वो कैपेबिलिटीज एक्वायर कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हॉबीज इंटरेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। और मैं फिर से बोलूंगा, हमारे इंस्टाग्राम पे चाहिए या वेबसाइट में जाइए, हम वो जो है हार्वी स्लम ऑफिसर के बारे में मैंने एक लिखा है, प्लीज रीड दैट, अंडरस्टैंड इट वेल एंड सी हाउ ही गॉट रिकमेंडेड। ही टोल्ड मी इन इंटरव्यू के, सर कहाँ टाइम है हमारे पास ये हॉबीज हॉबीज और रनिंग शनिंग का प्रिपेयर करने का, जो है उसमें कर करा के आ गए। जिंदा रहना itself is a challenge. Fine. And he was one of the best chaps that I have ever interviewed in my life. फर्जीवाड़ा के चक्कर में मत पड़ो, हॉबीज इंटरेस्ट से नहीं कोई सेलेक्ट होता। जितना दम होता है उसके बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं आप। ये रनिंग पनिंग फर्जी हॉबी मत डालिए, जो है जेन्युइन है उसे डालो, नहीं है तो मत डालो। या दैट्स इट। Okay. Yes, sir. Aman Sharma is asking, sir, I am preparing for defense. My father is a shopkeeper. I help him in his shop. Along with that, I am preparing for services, defense services. Should I look for job as well along with helping my father? नहीं नहीं, आप फादर की हेल्प कर रहे हैं एंड दैट इज गुड फॉर योर फैमिली एंड फ्रॉम योर बिजनेस पर्सपेक्टिव, एज फार एज योर अर्निंग इज कंसर्न्ड, कीप डूइंग दैट, दैट्स गुड इनफ जॉब, देयर नो प्रॉब्लम एट ऑल। या थैंक यू। Rohit Surya, we will take the last question. Rest we will take later on regarding eligibility criteria, medical issues. These are technical. You can contact the expert and check the PDF, the advertisement PDF, government advertisement. Rohit Suryavanshi is asking, sir, can you suggest best ways of interview practicing? Best way of practice. Okay, best way of practicing for interviews, don't do any practice at all. What you do is preparation is prepare yourself to become more effective in your daily life. Be competent at whatever you're doing. If you're a student, be a good student. If you're a worker, be a good worker. And keep yourself physically fit, keep your general knowledge okay. These are the things which are required for anything. And thereafter, please don't start rehearsing for interviews and writing down answers in registers. ये CIQ1 में ये होगा, उसका ये जवाब है, CIQ2 का ये जवाब है. These are absolutely ideas which I am dead against. Please don't do these things. They are not going to help you. तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. शांति से अपना को प्रिपेयर करिए जिंदगी में और जाके इंटरव्यू में जाके आराम से बैठिए and be honest and transparent and whatever he asks keep answering that. And हाँ, एक और बात भी है, कोई जल्दबाजी में वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब उन्होंने कोई पूछता है टाइम डिस्टेंस की ये वो, तो एकदम जल्दी से जवाब देने की कोशिश मत करो, सोच समझ के ठंडे दिमाग से जवाब दो, कैलकुलेट करके, क्योंकि गलत जवाब दोगे तो तुम्हारा मामला गया फिट। ठीक, दैट्स इट, थैंक यू। Thank you, sir. We'll meet next time, Sunday 10 a.m. And please write to us at nofrillsacademy@gmail.com. Okay, thanks.